Okay, assalamu alaikum everyone. We are about to start now. So today we are doing these two papers, May June 2021, paper 1, variant 2, paper 1 2. एक ये paper देख रहे हैं और इसके साथ we are looking at another paper that's May June 2021, paper 1 3. In दोनों papers से we will be doing some selected questions. Okay? We're not going to do complete papers. We will only be doing some selected questions from both of these papers. Now, let me first tell you which questions we're doing from this first paper. So from this first paper, we are doing question number 2, 3, 4, and 12. These are relatively more difficult questions. हम ये इस paper से देख रहे हैं. And once we're done with this, we'll be doing some questions from the other paper as well. That's paper 1, variant 3 of the same session. Okay. Now, if you have any other questions apart from this that you're finding difficult, you can also post. You can also let me know about them. We can see if we can discuss them as well. But I think from this paper, these 4 questions are the ones that are relatively more tricky. हम ये इनसे start कर रहे हैं. ठीक है. Okay. Let's begin. This is paper 1. Again, you've got to make sure that you're showing all your workings, especially quadratic equations में मसला होता है. Some people end up writing down the answers directly. वो नहीं करना. You've got to make sure that you're showing complete working. Okay. अच्छा. Now let's start with question number 2 of this paper first. We've got this graph that's the graph of y equals f of x. This is transformed to the graph of y equals 2 times f of x minus 1. Describe fully the two single transformations that have been combined to give the resultant transformation. Okay. Now, if you look at this, there is a vertical transformation. Up 2 se multiply karo, so that's vertical. So basically, whatever is happening outside the function, that's vertical. Whatever is happening inside the function, that is horizontal. So in this case, we've got 2 being multiplied outside, so that's vertical transformation. Multiplication ho rahi hoti hai, to usko hum kya kehte hain? This is stretch. So this is vertical stretch. That's one thing that's happening. Vertical stretch. What's the scale factor? Stretch factor. Stretch factor आपका वही होता है जो ये number होता है vertical transformation के अंदर, जिस number से आप multiply कर रहे हो, that is your stretch factor. So you'll say it's a vertical stretch with scale factor के लिए, stretch factor के लिए 2. That's one transformation that is happening. The other transformation is horizontal. अच्छा, जब एक horizontal है, एक vertical है, इसमें order matter नहीं करता, right? So you could start with any one of them first. आप vertical से start कर लें, horizontal से start कर लें, it doesn't matter. I'm starting with the vertical. उसके बाद दूसरी horizontal transformation है. Horizontal transformation क्यों है? Because we've got something that's happening inside the function here. X की जगह पे क्या हो गया? X की जगह पे आपके पास -1 आ गया. X की जगह पे -1 आ गया. सॉरी, x की जगह पे x -1 आ गया. ओके. अब हॉरिजॉन्टल में जब आप माइनस करते हैं उसका क्या मतलब होता है? you're going towards the right side. हॉरिजॉन्टल में it's a bit counterintuitive. जब प्लस करते हैं आप लेफ्ट पे जाते हो, माइनस करते हैं तो आप राइट पे जाते हो. So first of all, it's a translation. It's a translation. Why? Because प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस में ट्रांसलेशन होती है, फंक्शन के अंदर हो रहा है, तो इट्स हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले हम कह सकते हैं दिस इज horizontal translation. That's one thing. This is horizontal translation. And now we've got to write down कि इस translation का vector क्या है. Now you can, for your own thinking, you can write down कि आपके पास किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. दिस इज -1. आप कहोगे 1 यूनिट टू द राइट, या आप इस तरह सोच सकते हो 1 यूनिट राइट पे मूव हो रही है, मूवमेंट हो रही है. बट हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट डाउन? आप जब लिखोगे इसको, यहाँ पे आपने ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना है. इसका ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना है. व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? 1 यूनिट राइट है, यानी x कंपोनेंट आपका क्या होगा? 1. y कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा. Now this is very important. आप देखेंगे earlier we used to
get away with just writing this as well कि horizontal move कर रहे हैं, horizontal shift है, 1 unit right, horizontal translation है. But if you look at the recent marking schemes, so I was just looking at the recent marking schemes for May, June and November. उसने explicitly कहा हुआ है कि they are not accepting this language anymore. ये description, इस तरह की description they are not accepting anymore. ठीक है, पहले accept कर लेते थे. So if you look at earlier marking schemes, 2020 वाली आप देखें, उसमें उन्होंने इसको accept किया हुआ है. 2021 वाली मार्किंग स्कीम्स अगर आप देखें, उसमें इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ. तो जब आप ट्रांसलेशन लिखोगे, आपने क्या लिखना है? आपने अब ट्रांसलेशन वेक्टर ही लिखा करना है. ये इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करना, ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना जरूरी होगा. ठीक है, और स्ट्रेच को भी आपने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है. वर्टिकल स्ट्रेच है, ठीक है, और इसका स्केल फैक्टर जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए. स्केल फैक्टर क्या है? ठीक है, सिर्फ फैक्टर नहीं लिखना, स्केल फैक्टर पूरा लिखना, या फिर स्ट्रेच फैक्टर लिखना. ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट. सोचने के लिए आप इस तरह सोच सकते हो 1 unit right, but then you'll have to write the vector for that. Okay, why is it 3 marks? एक मार्क इसका होएगा वर्टिकल स्ट्रेच लिखने का, एक मार्क इसका स्केल फैक्टर लिखने का होएगा, और एक मार्क ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का वेक्टर लिखने का होएगा. सो इट्स जस्ट डिवाइडेड लाइक दैट. वो 3 चीजें, हर चीज का एक मार्क है. Okay, Mohima, so the first thing that we did was vertical transformation. वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के बाहर. जब भी मल्टीप्लाई होता है हमें पता है वो स्ट्रेच होती है. फंक्शन के बाहर होता है तो वो वर्टिकल होती है. सो दैट्स वर्टिकल स्ट्रेच. स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा? जो भी आपको वो नंबर होगा. सो दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, अच्छा, let's look at the second part. Now it says the curve y equals sine 2x minus 5x is reflected in the y-axis, and then it's stretched by scale factor 1/3 in the x direction. अच्छा, x direction का क्या मतलब है? Horizontal stretch हो रहा है. It's horizontal stretch. Reflected in the y-axis. ये कौन सी reflection है? Is it horizontal reflection or vertical reflection? Any idea about this? Reflection in the y-axis. Y-axis में reflect करेंगे. Is that going to be horizontal or vertical? आपके पास y-axis है, जो लेफ्ट साइड पे चीज होगी वो रिफ्लेक्ट होकर राइट पे चले जाएगी, तो राइट पे चीज होगी वो रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट पे चले जाएगी. सो मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल. Movement is horizontal. We say this is going to be a horizontal reflection. Y-axis is the line of reflection. Y-axis is the line of reflection. तो हम क्या कहेंगे? This is also horizontal. Horizontal reflection हो रही है. ठीक है, ये 2 चीजें हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है. अब रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच के अंदर आपका वो क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? आप किस ऑर्डर में करते हो ट्रांसफॉर्मेशन? स्ट्रेच और रिफ्लेक्शन के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट? इनकी सेम प्रायोरिटी होती है. अगर ट्रांसलेशन होता तो ट्रांसलेशन में आपको देखना पड़ता है कि कौन सा पहले करना है. हॉरिजॉन्टल के अंदर ट्रांसलेशन पहले करते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्शन बाद में करते हैं. वर्टिकल के अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्शन पहले करते हैं, ट्रांसलेशन बाद में करते हैं. रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच में इट डजंट मैटर आप कौन सा पहले करो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन होती है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. आपने 2 चीजें करनी है. रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाय -1. एक तो आपने ये करना होता है रिफ्लेक्शन की वजह से. अब ये स्केल फैक्टर 1/3 पे स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं. रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा? एक तो रिफ्लेक्शन से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हो, f of x जो भी आपका होता है ओरिजिनल ग्राफ, दैट गोज टू f of -x. x की जगह पे -x लग जाता है. x की जगह पे -x लग जाता है. अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है यहाँ पे, और उसका स्ट्रेच स्केल फैक्टर उसने क्या दिया हुआ है? स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1/3. इसमें क्या होता है? जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन है, if that's f of x,
1/3 अगर स्केल फैक्टर है तो x को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दो चीजें यहां पर हो रही हैं, एक तो x के साथ आपने माइनस साइन लगा देना है और एक आपने x को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, x जो है वो -3x, x की जगह पे -3x आ रहा है। Does that make sense? हॉरिजॉन्टल में उल्टा होता है, रिमेंबर 1/3 अगर आपका स्केल फैक्टर है तो आप बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। ये दो चीजें आपने करनी है। नाउ लेट्स राइट डाउन द फंक्शन। फंक्शन क्या था, y इक्वल्स sin 2x minus 5x, दैट्स द फंक्शन। आप क्या करोगे, जहां पे x लगा हुआ है x की जगह पे आप लिख दोगे -3x। एक तो x के साथ माइनस लग गया और दूसरा वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे भी x की जगह पे क्या कर देंगे, -3x, and now we can simplify this and that is going to give you sin of -6x plus 15x and that's your transformed curve। ये आपकी transformed curve की equation होगी, which I'm going to show with a different color so that you know this is different from what we had originally there। Transformation के बाद आपके पास ये equation आ जाएगी, ठीक है। अब्दुल मोइज, यहाँ पे ट्रांसलेशन तो हो नहीं रही ना, यहाँ पे तो ट्रांसलेशन नहीं हो रही, यहाँ पे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच है। रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच में ऑर्डर डज नॉट मैटर। रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप कोई भी पहले कर सकते हो। अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी हो तो हम ट्रांसलेशन पहले करते हैं और स्ट्रेच रिफ्लेक्शन बाद में करते हैं। सो लेट मी राइट दैट डाउन। हॉरिजॉन्टल में आपका जो ऑर्डर होता है दैट गोज लाइक दिस, फर्स्ट ट्रांसलेशन and then you do reflection or stretch, उसमें it doesn't matter। vertical में क्या करते हैं, vertical में you first do stretch or reflection and then you do translation। so this is how the order works in transformations, all right। in part A it doesn't matter because एक vertical है एक horizontal है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब डिफरेंट एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है उसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, जो मर्जी आप पहले कर लो जो मर्जी बाद में कर लो, दे आर ऑन डिफरेंट एक्सिस। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो मर्जी पहले कर लो, ओके। फाजिल, इट डजंट मैटर राइट, आप 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो या नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई कर दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास उसमें, राइट। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, बट इट डजंट रियली मैटर इन दिस केस। अगर वो ट्रांसलेशन होती वहां पे तो तब वो मैटर करता, और यहाँ पे तो मैटर नहीं करता, ओके। So that's what the equation turns out to be। You can leave it like this, or if you remember that rule कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ हो, sin of minus theta, that's basically the same thing as minus sin theta। अगर आपको trigonometry याद हो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, it's equivalent to saying minus sin 6x plus 15x, इस तरह भी लिख सकते हो, and that's also fine। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। That's what your equation is going to be in this case। All right, let's move on। So that was question number 2, transformations। recent papers में आप देखेंगे अब उसने order वाले questions देने शुरू कर दिए, तो you have to understand the order correctly as well, कि ये generally आपका order होता है, ठीक है। Okay, I understand your question now। yes, so उसने equation बनाने के लिए कहा होगा तो आपको बताएगा कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, तो वो उसने बताया होगा। अगर आप खुद से फिगर आउट कर रहे हो तो फिर बेसिकली ये ऑर्डर होता है। अच्छा, let's move on to the next one। Again, it's a slightly different question। You won't see this in any other past paper before। ये specimen में आपको मिलेगा इस तरह का, but it's not anywhere else before this। ये भी recently आया हुआ है syllabus के अंदर, इसका एक part, in fact the first 2 parts। Let's have a look at this। The equation of a curve is y equals x minus 3 into x plus 1 plus 3। The following points lie on the curve। Non-exact values are rounded to 4 decimal places।
all of these points lie on the curve A, B, C, D, E. सबसे पहले वो कहता है find the value of k, giving an answer correct to 4 decimal places. How can we find the value of k? All of these points lie on the curve, right? So this point also lies on the curve, the point A. हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे, we've got the equation y equals, डायरेक्टली इनपुट कर देते हैं, ये इक्वेशन है, इसके अंदर मैं ये पॉइंट इनपुट कर रहा हूँ, and instead of x I can input 2, so I get 2 minus 3 into square root of 2 plus 1 plus 3, and I can just evaluate that. That will be the value of k. So y की जगह पे k input कर दिया basically, x की जगह पे 2 input कर दिया, ये point input कर दिया, and now that's going to give me the value of k. ये evaluate कर लें, देखना के पास क्या आता है. We've got minus square root of 3 plus 3, but they're asking us for an answer to 4 decimal places. आप इसको calculator पे evaluate कर लें, और अब देखें क्या आता है. ठीक है, minus square root of 3 plus 3, and that gives me 1.2679. This is what I'm getting. Yes, the first part is coordinate geometry. That's correct, but you'll see you'll have something else coming after this. अभी second part देखते हैं. Second part में इसने क्या कहा है? Find the gradient of AE. Find the gradient of AE, giving our answer correct to 4 decimal places. Okay, so A से E तक का gradient find कर ले. Again, gradient formula apply करना है, y2 minus y1 और x2 minus x1. We can do 3 minus k. K की value अब क्या है? 1.2679. Or you can use a more exact value if you want. In fact, it's better to use a more accurate value because यहाँ पे answer आपको दोबारा से 4 decimal places तक चाहिए. So you should use a more accurate value from your calculator. जो आपने calculator से निकाला है. So I had 1.267949. So I'm putting all of that here ताकि answer accurate है. Divided by x2 minus x1, that's going to be 3 minus 2. Let's evaluate this. ये देखने के पास क्या आ जाता है? 3 minus the answer. That gives me 1.7321. That's what I'm getting when I do this. अब यहाँ पे एक भी decimal place आपका गलत हुआ, आपके marks कट जाएंगे. ठीक है? अगर आप यहाँ पे 1.7320 लिख दो, you lose 1 mark. Okay? अच्छा. So that was the second part. Let's move on. Now, part C says the gradients of BE, CE, and DE rounded to 4 decimal places are given. State, giving a reason for your answer, what the values of the 4 gradients suggest about the gradient of the curve at the point E. Now, remember, this is how we actually started differentiation. Differentiation, जब हमने topic start किया था, this was the first thing that we did when we tried to understand कि आप derivatives find कैसे करते हो, drawing chords, right? So basically, क्या है, आपके पास कोई curve है, we don't know what the shape of the curve is, but it's, you know, maybe it's going to look like this. एक point है कहीं पे, that point is, let's say, this point. किस point पे आपको find करना है? Point E के ऊपर. So this is a point E. आप क्या कर रहे हो? E के साथ आप कुछ gradients ले रहे हो. So you have this point A, you've got this point B somewhere, you've got this point C somewhere, you've got this point D somewhere, right? So maybe the gaps are not very accurate, but इस तरह से है कि एक B point लिया, फिर एक ये C point लिया, एक point D लिया. आपको क्या करना है? E के ऊपर gradient estimate करना है, right? E के ऊपर gradient estimate करना है. तो E के ऊपर gradient estimate कैसे होगा? अगर आप AE का gradient देखो, वो तो E के ऊपर gradient नहीं बता रहा आपको. That's not very accurate. E के ऊपर tangent जो है आपके पास जो होगा, E के ऊपर जो tangent होगा, that's going to be like this. वो इस तरह से होएगा. ये डायरेक्शन तो वो नहीं है. अगर आप BD देखोगे, that's better than before, but it's still not very accurate. BE देखोगे, BE, it's better than before, but still not very accurate. CE देखोगे, again, much better than before, but still not very accurate. As the second point gets closer, आपका gradient का estimate बेहतर होता जाता है, right? So basically, आप यहाँ पे करते क्या हो? आपके पास ये सारे gradients given है. First gradient क्या था?
AE का वो आपने यहाँ पे फाइंड किया 1.7321, दैट्स द फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस 1.7321, ये आपका ग्रेडियंट है A से लेकर E तक का. Second is 1.9748, third is 1.9975, fourth is 1.9997, and now you think about what value are these numbers approaching? ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं? ये सारे नंबर्स किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, it's actually a guess at the end of the day, लेकिन वो ये हमेशा इंटीजर हुआ करेगा. आपको नजर आ रहा है एक पैटर्न, ये किस वैल्यू के क्लोज जा रहे हैं, किस इंटीजर के क्लोज जा रहे हैं सारी वैल्यूज, दे गेटिंग क्लोजर टू 2. तो आप कह सकते हो कि E के ऊपर जो ग्रेडियंट है that's basically going to be almost equal to 2. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Gradient for this is equal to 2. That's what you get there. That's what you get right there. ठीक है. अच्छा, अब उस दूसरा उसने क्या कहा है? Give a reason for your answer. एक मार्क आपको इसका मिलेगा for writing down the gradient. Second mark आपको किसका मिलेगा? You have to give a reason. So you can say the gradients of the chords, ये जो chords हमने सारी बनाई है, all of these chords, A, E, B, E, C, E, D, E, ये gradients किसको approach करें? They're approaching 2. So you're going to write the gradients of the chords AE, AD, AC, AB, and so on are approaching 2. ठीक है? So that's what is going to be. Yes, so gradient of the curve at E, उसने वही पूछा हुआ ना, तो उसने यहाँ पे लिखा है gradient of the curve at E, उसी की बात कर रहे हैं. So gradient of E की बात कर रहे हैं. So if you want to be explicit, you can write that. You can say we're talking about gradient at E, but उसने वही पूछा था, उसी को refer कर रहे हैं. It's the gradient at the point E. Okay. All right. Acha, now this is a concept that some of you might have missed when you were doing differentiation the very first time. या आप लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया होगा इस टाइम के ऊपर कि इसका तो क्वेश्चन ही नहीं आता. So make sure that you understand this well. Now just give me a minute. I'm just going to leave a link here just as a reminder for you कि आप इसको बाद में एक दफा देख लें जरूर कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. ठीक है, because a lot of people do not know about this because इसके पास पेपर्स में क्वेश्चंस कोई नहीं है. आपको एक ये मिलेगा, एक आपको स्पेसिमेन में मिलेगा जो आपका 2020 का स्पेसिमेन है, आपको एक वहां पे मिलेगा. Right? So I'm just going to leave a link here. This could be a minute. P1 differentiation introduction. Yeah. So do have a look at this. It's an unlisted video, but this might be helpful. I'm going to post this here as well. Okay, that's good to know, Fazan. When you're present, yes, in class, you do. Okay, all right, let's move on. Question number 4, ये देखते हैं. Again, it's a binomial question, but it's a slightly different one. It's a slightly different one from what we usually see in past papers. So let's have a look at this as well. The coefficient of x in the expansion of 4x plus 10 over 3 whole cube is p. The coefficient of 1 over x in the expansion of this is q. Given that p equals 6q, find the possible values of k. अच्छा, उसने एक relationship आपको बता दी है p और q के दरम्यान में. That's here. p equals 6q. और आपको क्या करना है? अब कोई और relationship find करके आपको k की values find करनी है. k क्या है? आपके पास यहाँ पे k भी आ रहा है. Now you've got 2 expansions to do. या आपके पास 2 expansions हैं. हम क्या करते हैं? दोनों को expand कर लेते हैं using binomial expansion. Yeah, so let's find the terms. That's what you've got to do here.
अच्छा, so सबसे पहले एक expansion कर लें. You've got 4x plus 10 over x whole cube. Now, there are multiple ways of doing this. आप term formula apply कर सकते हो if you want, but it's a very small power. It's much quicker to just apply the binomial formula and expand that. उससे आपको directly मिल जाएगा. Right? So you don't have to, use the term formula and make it very complicated. आप directly expansion कर दें. एक दो terms के बाद आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए. Expansion क्या होती है? You got the formula for that. A raised to power n plus nc1, a raised to power n minus 1b plus nc2, a raised to power n minus 2 b square and so on. ये आपके पास formula होता है इसका. हम ये formula apply करते हैं. 4x is a and 10 over x is b. ठीक है, इसको expand कर दें simply. 4x whole raised to power 3, a raised to power n था ना, so that's going to be 4x whole raised to power 3 plus nc1, so this is going to be 3c1, 4x whole square into b is 10 over x. Now let's stop here for a moment and see आपको क्या चाहिए था. आपको चाहिए था coefficient of x. First term कौन सी आई है आपके पास? First term is x cube. Second term देखें, this is x square. This is x in the denominator. X square over x क्या हो जाएगा? That is x. We already have the term that we need. आपको और expand करने की जरूरत ही नहीं. You just stop at this point. This is the term that you're looking for because इसके अंदर x आ रहा है. आपको बाकी expand करने की जरूरत नहीं है. इसको simplify कर लेते हैं. ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3c1 is just 3, 4x का whole square is 16x square, and then you've got 10 over x, and that gives you 480x. ये आपके पास आ गया coefficient of x in the expansion of this. Coefficient of x आपके पास क्या है? It's 480. इसको आप क्या करोगे? इसको आप equate कर दोगे p से. This is the value of p. So p आपके पास क्या आ गया? p आपके पास आ गया 480. Is that okay? Once you've got the value of p, you can find the value of q as well because वो आपके पास relationship है p और q के दरम्यान में. Let's input this there in the other relationship, and that's going to give you q as well. इसको वहाँ पे input कर देते हैं. We say 480 equals 6 times q, and q will turn out to be 480 divided by 6, and that is 80. q की value भी हमारे पास आ गई, that is 80. Okay, so you've got p now and we've got q now. ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास. अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना था? k फाइंड करना था. Let's do the other expansion now because दूसरी expansion के अंदर हमारे पास k आ रहा है. उसमें हमें कौन सी टर्म चाहिए? उसमें हमें चाहिए first, पहली expansion में हमें x का coefficient चाहिए था. Second expansion में we need 1 over x. Let's do the second expansion as well. Now what's the other expansion? We've got 2x plus k over x square whole raised to power 5. ये आपके पास ये expansion करनी है. आपको इसकी coefficient of 1 over x चाहिए. ठीक है, coefficient of 1 over x. Again, let's just expand this. Don't worry about the term formula and everything. आपको उसकी जरूरत आपको करने की जरूरत नहीं है. That's going to get more complicated. आप simply इसको expand कर लें और देख लें कौन सी term आपको चाहिए. ठीक है, कैसे expand करेंगे? Again, we're going to use the same formula. A raised to power n. This is the formula that you've got. आपके पास formula sheet सामने होगी when you're working on this. A raised to power n. That's the first term. A क्या है यहाँ पे? A is 2x. 2x whole raised to power 5 plus nc1, that's 5c1 into 2x whole raised to power 4 and k over x square whole raised to power 1. Now you're going to start at this point and look at the terms. आपको pattern मिल जाएगा. कैसे? First term क्या है? First term is x raised to power 5. What about the second term? You've got x raised to power 4 here and x square in the denominator. What does that give you? X raised to power 4 over x square. That is basically x square. Second term आपके पास आ गई x square. अब ये जो powers होती हैं ना binomial expansion के अंदर, they're always in an arithmetic progression.
ये हमेशा एक सीक्वेंस में होती है, पावर 5 है, नेक्स्ट 2 है। अब आपको पता है नेक्स्ट पावर्स क्या होंगी, x पावर -1 होगा, उसके बाद x पावर -4 होगा, उसके बाद x पावर -7 होगा। ये हमेशा इस तरह से ना एपी के फॉर्म में होती है। आप 2 पावर्स निकाल लें, आपको पूरा का पूरा पैटर्न मिल जाता है। ओके, सो यू नो व्हाट द नेक्स्ट पावर्स आर गोइंग टू बी। सो हमें कौन सी चाहिए थी, हमें चाहिए था 1/x। सो बेसिकली द वेरी नेक्स्ट टर्म इज व्हाट वी नीड। ये नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए, ये वाली। एक और टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, 5c2 into 2x whole raised to power 3 into k over x square whole raised to power 2. And you can see we've got the term that we need, because this is x cubed, this is x raised to power 4 in the denominator, x cube over x raised to power 4. ये term हमें चाहिए. We stop at this point and we don't go any further. यहीं पे जाके रुक जाते हैं. And now we simplify this term. बाकी सबको simplify करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी को ignore करें, हमें सिर्फ ये वाली term चाहिए. ठीक है? Let's simplify this thing now. ये क्या आता है? 5c2 is 10. 2x whole cube, that's 8x cube. And then you've got k square over x raised to power 4. And what does that give us? That gives us 80 k square into 1 over x. This is the coefficient that we've got for 1 over x. 80 k square आपका coefficient है 1 over x का। अब उसने क्या बताया हुआ है हमें? उसने बताया है the coefficient of 1 over x is supposed to be q. तो इसको आप क्या करेंगे? आप q से equate कर देंगे. So we say 80 k square equals q. We already have the value of q. q की value क्या है? 80. So we have 80 k square equals 80 and k square equals 1, which means k equals plus minus 1. K square equals 1 and k equals plus minus 1. उसने कहा हुआ था possible values of k. So you know from that you should have multiple values. ये आपके पास 2 values आई हैं, k equals plus or minus 1. Is that okay to everyone? Any problems with this? This was question number 4 from this paper. एक हमें ये करना था. ठीक है? Now the rest of the questions you'll see they are relatively straightforward, most of them. But if you have confusion in any of them, let me know and I'll have a look at that. The rest look relatively straightforward, apart from the last question of this paper. And that's what I want to do next, question number 12 from this paper. Let's look at this. Now it looks very scary at first because काफी complicated से figure लग रही है. How do we think about this? So it says the diagram shows a cross section of 7 cylindrical pipes, each of radius 20 centimeters. So there are 7 pipes. जो आप उनको side से देख रहे हैं. This is basically the hole that pipe has. उसको आप side से देख रहे हो इस तरह से. ठीक है? There are 7 of these. आप देख लें 7 circles हैं, A, B, C, D, E, F, and then you've got a circle in the middle. All of them have radius 20 centimeters. They're held together by a thin rope, which is wrapped tightly around the pipes. The centers of the 6 outer pipes are A, B, C, D, E, F. So you can see that in the figure as well. Now we are told that the points P and Q are situated where straight sections of the rope meet the pipe with center A. Okay, so this is point P. This is point P here. This is point Q. They are where the straight sections of the pipes of the rope. So this is the rope. ये जो आपको side पे नजर आ रही है आपकी rope है. P and Q are the point where the straight sections of the rope meet the circle that has the center at A. We first have to show that the angle PAQ, that's basically this angle. We have to show that this angle is equal to pi over 3 radians. ये आपने show करना है. ये pi over 3 कैसे आ रहा है? Now, how do we think about this? How can this angle be pi over 3? PQ is 20. How do we know that? PQ कैसे 20 है? What's the reason for that? If the triangle is equilateral, that's an assumption. That's an assumption that the triangle is equilateral. How do we know that?
सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये आपका सेंटर है दरम्यान वाले सर्कल का, ये दरम्यान वाले सर्कल का सेंटर है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, एक लाइन हम ये बना लें, ओके, एक लाइन ये बन गई। sorry, my lines are not very straight here. Let me try again. No, यहाँ पे line tool नहीं चलता unfortunately. अच्छा, so this is one line and this is another line. अब देखें, इस तरह के आपके पास इस बड़े वाले जो ये जो आपके पास आउटर रीजन है उसमें कितने सेक्टर्स बन सकते हैं? So basically I can divide my whole figure into different parts like this. एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है. How many parts are these in total? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 parts like this, and they're all identical. They're all identical parts. What is going to be the angle of one of these parts like this? ये जो एक part मैंने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ किया, इसका एंगल कितना आएगा? टोटल एंगल कितना होता है सर्कल के अंदर? सर्कल के अंदर टोटल एंगल होता है 2 पाई, उसको 6 से डिवाइड कर दें तो ये एंगल कितना आ जाएगा? कॉल दिस समथिंग, आई एम गोइंग टू कॉल दिस पॉइंट y, दिस पॉइंट z. तो y x z, ये एंगल मेरे पास कितना आ गया? टोटल 2 पाई होता है सर्कल में, उसको डिवाइड कर दिया किससे? डिवाइड कर दिया 6 से, दैट्स π/3. सो दिस एंगल इज सपोज्ड टू बी π/3. ये π/3 आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं? we can draw a tangent like this here, a radius like this here. This is a radius and this is also a radius. ये एंगल आपका π/2 हो गया, ये एंगल π/2 हो गया. आपको क्या मिल गया? आपको ये बाकी एंगल मिल गया कि ये कितना होना चाहिए, which is this angle. ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? ये क्वाड्रिलेटरल है, π/3 ये है, ये π/2 है और ये एंगल भी π/2 है. तो a के ऊपर जो नीचे वाला एंगल बन रहा है, I'm going to call this something as well. Let's call this point m, let's call this point n. तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से? So मेरे पास ये कहाँ से, ये क्या आ गया? The angle MAN, what's that? Total क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है? 2 पाई, उसमें से माइनस कर दिया π/3, π/2 एंड π/2, दो आपके पास ये राइट एंगल्स हैं, उनको माइनस कर दिया और इस π/3 को माइनस कर दिया. ये आपके पास एंगल आ गया MAN. What does this turn out to be? Can somebody tell me what this is? 2 pi minus pi minus π/3. That's 2 π/3. Okay, so that's 2 π/3. ये एंगल 2 π/3 आ गया. This angle is 2 π/3. अब ये 2 π/3 है, ये आपको पता है 90 है, because this line and this line they are parallel. आपको ये पता है ये भी 90 नहीं π/2 है, ये भी ये लाइन से पैरेलल है. This is also π/2. ये दोनों एंगल्स आपके पास राइट एंगल्स आ रहे हैं. So जो बाकी एंगल बचेगा आपके पास वो क्या होगा? That will be PAQ. So what you're going to do here is you're going to say PAQ angle. That's the angle in a complete circle. वो कितना होता है? 2 पाई. complete circle का एंगल, उसमें से माइनस कर दें कौन कौन से एंगल्स? ये 2 π/3 माइनस कर दें, ये π/2 माइनस कर दें. So this is π/2 and this is also π/2. ये दोनों एंगल्स उसमें से माइनस कर दें, minus π/2 minus π/2, and that's going to give us the result, which turns out to be π/3. That was a lot of thinking for 2 marks, but yeah, that's one way to do it. That's one way to do it. There might be a quicker way of doing this as well, but yeah, so this works. This is how you can prove this. Assumptions नहीं ले सकते, जो भी आप चीज लिख रहे हो, there should be a reasoning for that. Okay, so this is one proper way of doing this. All right, I hope that makes sense. Let's move on to the next part. Now it says find the length of the rope. Length of the rope. अब length of the rope कैसे find करें?
what I'm going to do is I'm just going to copy this figure here on the side. I'm going to copy this figure on the side. Okay, उस पे बहुत clutter हो गया. This is the figure that we've got. Okay, this is the figure that we've got. We've got to find the length of the rope. Length find करनी है. अब rope पे देखें कौन कितने parts हैं आपके. You've got an arc length here. You've got this arc. You've got this arc. You've got this arc. You've got this arc. And then you got this arc and this arc. ये आपके पास कितनी arc lengths हैं? There are 6 arc lengths like this. And then you've got some parts that are straight lines. You've got one straight line here, another straight part here, another straight part here, another straight part here, another straight part here, and another straight part here. So you've got 6 straight parts. You've got 6 straight parts. 6 arc lengths हैं और 6 straight parts हैं. हम क्या करेंगे? इन सब की लेंथ निकाल के इनको ऐड कर देंगे. So basically एक arc की लेंथ निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें. एक स्ट्रेट पार्ट की लेंथ निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, लेट्स डू दिस. मोहित भाई, you can always just so you can rewind a bit on YouTube. आप थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे. You can just watch that again. That should be helpful. If you have any specific questions that might be easier to answer, वो पूरा repeat करना, it's going to take time otherwise. With the interior angle formula, no, that's not going to work here. These are not polygons जहाँ पे आप वो formulas use कर सकते हैं. अच्छा, length of the rope find करें. अब arc length देख लेते हैं. देखिए first part में उसने आपसे क्या करवाया, उसने ये show करवाया कि angle pi/3 radians. Now the first part is quite tricky. अगर आपसे वो नहीं भी होता, let's suppose, आपको ये एंगल यूज करके आप सेकंड पार्ट फिर भी कर सकते हो. दिस एंगल इज pi/3. आपको इसको यूज करना है. यू नो द रेडियस इज 20. तो आप एक आर्क लेंथ फाइंड कर लें पहले. लेट्स फाइंड आर्क PQ. व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? वी गॉट द फॉर्मूला फॉर दैट. S equals r theta. Arc length equals radius into the angle. ठीक है. What does that give us? 20 is the radius into the angle. The angle is pi/3. We've got the arc length PQ. ठीक है. We've got 6 arcs like this. तो क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज क्या करनी है? ये जो स्ट्रेट पार्ट्स हैं, इनके लेंथ फाइंड करनी है. How do you find the length of these straight parts? Now we might have to use some trigonometry here. Let's think about this. In fact, no, we actually just know the length of the straight parts. Why? Because we know what AB is. AB length पता ना क्या है? Any idea? These are इसको the middle point को अगर हम कुछ नाम दे दें, let's call this point P in the middle. AP भी रेडियस है और PB भी रेडियस है. दोनों रेडिया है यहाँ पे. उन दोनों की लेंथ तो हमें पता है कितनी होगी. AB टोटल कितना हो जाएगा? That's going to be 40 basically. Right? टोटल लेंथ हमारे पास 40 हो जाएगी. तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि AB length 40 है. If AB length is 40, तो जो ऊपर वाली लेंथ है, let's call this something, जो Q है, इसको हम R कह देते हैं. QR क्या होगी? वो लेंथ भी हमारे पास 40 हो जाएगी, because they are basically making a rectangle like this. तो opposite sides आपकी equal है. AB और QR equal है. तो एक जो straight part है, one straight part, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ आपकी 40 सेंटीमीटर है. ठीक है. दोनों लेंथ्स आ गई आपके पास. अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द रोप जो आपकी आर्क है, that's 20 pi/3. What you can do is you can multiply that by 6. 6 into 20 pi/3, that's one thing that we can do. Plus 6 times this length of a straight path.
that is 40. इन दोनों को add कर दें, that's going to give you the result. 20 pi into 2, that's 40 pi plus 240. अगर उसने exact पूछा होता अब इस तरह से छोड़ देते, but since you're not asked for an exact answer here, you can evaluate this. 20 pi plus 240, that gives me 365.67. So this is 365.67. इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 366 to 3 significant figures. All right, that's what we get here. Okay, any problems here? Any problems here? Yeah, 40 because AB 40 है, 20 and 20 radius. तो ऊपर जो Q आ रहा है straight path वो भी 40 होएगा. They're the same length. That's where 40 is coming from, right? Okay. Thank you, Maz. Baby steps. So the first 1000 is done. Let's do the next part now. Yeah, so we have another part to this. Find the area of the hexagon A, B, C, D, E, F, giving your answer in terms of square root of 3. अच्छा, हमने लेंथ फाइंड किया अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर. अब हेक्सागन की बात कर रहे हैं, वो कौन सा हेक्सागन? A, B, C, D, E, F. Okay, so we've got a shape here. A, B, C, D, E, F. This is the hexagon that we're talking about. What we want is, we want the area of this hexagon. अब hexagon के area को formula तो हमें नहीं आता, हमें नहीं पता कैसे calculate करते हैं. What we can do instead is, we can divide it into trapeziums or triangles, however you want, right? आप इसको ये trapezium बना लें, that's one idea. अगर आप इसको ये trapezium बनाते हो, तो उससे आपके पास बहुत clearly आपको पता चल जाता है, this length here is going to be, or maybe not, because इसकी height नहीं आएगी. Height आपको निकालनी पड़ेगी. You can use trigonometry for that if you want. अगर आप इस तरह करना चाहें, अगर इसको हम triangles में भी break करेंगे, तो उसमें भी हमें वो तो करना पड़ेगा. Yeah, so another idea is, ये जो regular hexagon होता है ना, इसको हम इस तरह भी break कर सकते हैं. Height 40 नहीं है. फज़ेन, ये जो आपके पास इस trapezium की height है, this is not 40. Height 40 नहीं है. This it's not 2 radii. It's not 2 radii. Think again. अच्छा, height हमारे पास नहीं है. हम क्या कर सकते हैं? One way to do this would be, एक तो trapezium आप कर सकते हो. आप क्या कर सकते थे? आप ये एक right angle triangle बनाते, ठीक है? और आप क्या करते? आपको पता है ये length 20 है और ये length 40 है, ठीक है? AF तो 2 times radius है ना, वो length 40 हो जाएगी AF. नीचे वाला पार्ट ये सिंगल रेडियस है, 20 हो गया. तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते थे. ये एंगल आ जाएगा, या एंगल भी ना फाइंड करें, इससे आप बस हाइट फाइंड कर लें. इससे आप हाइट फाइंड कर लें पाइथागोरस अप्लाई करके, ठीक है? हाइट आ जाएगी और फिर आप क्या कर सकते हो? सिंपली आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट्स वन आइडिया. ये कर सकते हैं, यू कैन डू दैट. अनदर आइडिया कुड बी, इसको हम 6 ट्रायंगल्स बना लें. किस तरह से? आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फर्दर. ये जो हेक्सागन है, मैं इसको इस तरह से ब्रेक करने लगा. So essentially I've got 6 equilateral triangles. एक ट्रायंगल का निकाल लें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें. So what do we know about these triangles? We know that this length is 40, this length is 40, this length is 40. Equilateral triangle angle क्या है? Angle is pi/3. Equilateral के अंदर angle क्या होता है? pi/3 होता है. And now you can just use the triangle area formula directly. To find the area of this one triangle. इस triangle के area निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा हेक्सागन का. मेक सेंस? इसका हम एरिया निकाल लेते हैं. इसको भी मैं कुछ पॉइंट कह देता हूँ. लेट्स कॉल दिस पॉइंट x. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? आई एम गोइंग टू से एरिया ऑफ हेक्सागन
area of the hexagon is equal to 6 times the area of the triangle BXC। उस तरह की 6 ट्राइंगल्स आ रही है ना मेरे पास उस हेक्सागन के अंदर, एक ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ट्राइंगल का कैसे आएगा? हाफ AB sin C, दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज π/3 एंगल। हम क्या करेंगे? हाफ A that's 40, B that's 40 into sin of π/3। ये इवैल्यूएट कर लें। अच्छा, जब भी उसने एग्जैक्ट आंसर आपसे मांगा हो, आपने क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप दिखाना है उसको, ये प्रोसेस सीधा कैलकुलेटर से इवैल्यूएट नहीं करना। ये sin π/3 की वैल्यू पहले आपने उसके अंदर इनपुट करनी है खुद से। ठीक है, अब इस तरह करेंगे 3 into 40 into 40, sin π/3 की वैल्यू क्लियरली दिखानी है एक्सप्लिसिटली कि ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये कैलकुलेटर से निकालेंगे आप, लेकिन इसको लिखेंगे अलग से पहले। एंड नाउ यू कैन राइट डाउन योर फाइनल आंसर इफ यू वांट, दैट्स ओके। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3 into 40 into 40 divided by 2 into square root of 3. So what do we get? We get 2400 into square root of 3. Square root of 3 के terms में आंसर देना था. This is what we get at the end. All right. Any problems with this? Is this okay? That's the area of the hexagon. Let's move on. Yeah. Okay. All right. Okay. That's okay. Achha, let's move on to the next one. Find the area of the complete region enclosed by the rope. Okay. Now again, that's pretty tricky. That's very tricky. Area of this complete region enclosed by the rope. How do you think about this now? Again, I'm going to copy that figure because उस पे फिर बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया। इसलिए जब भी आप ये एग्जाम में करेंगे, आप पेंसिल से ड्राइंग करेंगे ताकि एक पार्ट हो जाए, तो आप पिछला वाला पार्ट में जो भी आपने फिगर के ऊपर कुछ भी किया हुआ है वो आप इरेज कर दें। Let's think about this now, right? Yeah, so this question is actually quite tricky. I agree. Let's think about this now. इस पूरी फिगर का आपने एरिया निकालना है। अब इसके लिए क्या करें? Let's try to use what we've done in the previous part. Previous part में हमने क्या किया था? हमने ये hexagon find किया. Is that going to be helpful? I think that's going to be helpful because हमने hexagon की area find कर लिया और उसके बाद हम जो बाकी region रह गया है वो find कर सकते हैं. Yeah, let's actually do it that way because previous part can be used for this. वो हमारा काफी आसान हो जाएगा उस तरह से. Let's see how we're going to do this. हमने ये किया first part के अंदर. I'm drawing that hexagon again. That's this hexagon. ये एरिया उसने पहले निकलवा लिया आपसे, ये एरिया उसने निकलवा लिया आपसे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो आउटर रीजन जो हमने अभी तक नहीं कंसिडर किया उसके एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है? ये अंदर वाले पार्ट को इग्नोर कर दें, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. दैट्स 2400 स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ वी आर लुकिंग एट द रेस्ट ऑफ द रीजंस, ठीक है? अंदर वाले पार्ट को हम शेड so that we know we are not considering that anymore. ये अंदर वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ. Now let's look at the outer region. अब outer region में आपके पास क्या क्या आ रहा है? What we can do is we can try and make a rectangle like this. अगर हम इस तरह से एक rectangle बना दें, तो इस तरह के कितने rectangles आएंगे हमारे पास? We got one rectangle here and another rectangle here. सब कुछ 6 times ही आ रहा है, तो ये भी 6 times ही आएगा most likely. See that here? You've got 6 rectangles like this. Make sense? I'm going to shade those rectangles. एक rectangle ये है, and you've got this rectangle. ठीक है, we've got this rectangle. 3, we've got another rectangle here. 4, 5 and 6. इन rectangles के areas निकाल लेंगे. और फिर बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी हमारे पास सेक्टर्स बच गए, और सेक्टर का एरिया हमने निकाला था नहीं पहले कहीं पे? नहीं, एरिया निकाला हम लेकिन हमें एंगल पता है उसका.
बाकी आपके पास ये सेक्टर्स रहेंगे, I'm going to shade them like this. ये आपके पास सेक्टर्स हैं. These are how many sectors? These are 6 sectors in total. इन सबको ऐड कर लेंगे. Okay, so that's going to give you the complete figure. Now let me write that down. 2400 square root of 3. Total area के पास क्या क्या आ जाएगा? Total area एक तो आपके पास है 2400 square root of 3 from the previous part. और क्या है? 6 times the rectangles. ये आपके पास ये ब्लू वाला पार्ट है. और क्या करना है उसके अंदर? 6 सेक्टर्स. उन सेक्टर्स के एरिया को ऐड कर देना. ये आपने करना. अब रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? Do we have the length? We know that this length is 20 and this length is 40. So that's just 20 times 40, length into width. What about the sectors? We know the formula for that. Half r square theta. Radius क्या था? 20. 20 square. Angle क्या था? Angle उसने first part में निकलवाया था यहाँ से. Prove करवाया था. That was pi over 3. So that's pi over 3. Half r square theta. And now we just need to evaluate this. ये आप देख लें आपके पास क्या आ जाता है. इस पूरे को पूरे कैलकुलेटर में डाल दें. उसने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगी आपसे. You can just write in decimals and that's okay. That's going to give you the result. Okay. Let's figure this out. 2400 square root of 3 plus 6 into 800 plus 3 into 400 into pi divided by 3. And that's giving me 10,213. Or in fact 14, round off करके. Right, so that's the final result. You can leave it like this if you want, and that's okay. So round off करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, exact form में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, but that's your final result. Okay. Any problems with this? Any problems with this? So that completes our last question here. This was question number 12 from this paper. Okay. Let's move to the other paper now. If there are no questions on this. Okay, so I'm assuming there are no questions. Let's move to paper 5, variant 3. Let's take a 2-minute break before we start that. उसमें से भी कुछ questions हम करेंगे जो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं. Paper 5, variant 3. That's the other paper that we're doing. Sorry, paper 1, variant 3, not paper 5. Paper 1, variant 3. ये paper देख रहे हैं. Thank you, Moima. So we have a 2-minute break, and then we're starting this paper, paper 1, variant 3. All right, let's begin. Let's resume. We are going to now start this paper. Paper 1, variant 3, May, June 2021. इससे हम कुछ ज़्यादा questions देख रहे हैं because this paper does look quite tricky. Let's start with this. Okay, so we're looking at these questions. Question number 2, 6, 8, 9, 10, 11 from this paper. ये सारे questions हम देख रहे होंगे इस paper से. Let's start with the first one. Question number 2 से start करते हैं. First question आसान है काफी, आप कर लेंगे. Let's do this. Question number 2. अच्छा, so the function f is defined by this for x between 1/2 and a. It's given that f is a decreasing function. Decreasing function क्या होता है? Decreasing function वो होता है जिसमें gradient आपका जो है वो negative होता है. Derivative आपका negative होता है. That's a decreasing function. Okay. Given that, we have to find the maximum possible value of the constant a. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? We're going to find the derivative, and we're going to put the derivative less than 0. ठीक है, उसको negative input कर देंगे. So let's find the derivative. F of x है हमारे पास. F dash of x क्या हो जाएगा? F dash of x is going to be 1/3 as it is. Constant तो वैसे ही रहेगा जो multiply हो रहा है. Multiply by the power, that's 3/2. Power से multiply कर दिया.
Now whatever is inside stays as it is. Decrease the power by 1. Power में से 1 minus कर दिया. 3/2 minus 1. What's that? That's 1/2. And then multiply by the derivative of what is inside the power. 2x minus 1 का derivative क्या है? 2 उससे multiply कर. ठीक है? That's the derivative of the first term. Then what's the derivative of 2x? 2x का derivative 2 होगा. So this is what we get. ठीक है? Now, since we are given that f is a decreasing function का मतलब ये है कि ये जो आपके पास gradient आ रहा है, this should be negative. ये पूरा का पूरा आपके पास negative होना चाहिए. ठीक है? So basically, if I were to simplify this, पहले simplify कर लेते हैं. हमारे पास क्या आता है simplify करके? 3 and 3 get cancelled, 2 and 2 get cancelled. We are left with 2x minus 1 whole raised to power 1/2 minus 2. ये हमारे पास आ रहा है इसका डेरिवेटिव. ठीक है? अब हमें करना क्या है? हमें ये शो करना है that this derivative, और हमें बताया, उसने बताया है कि this derivative is less than 0. ठीक है? ये less than 0 उसने आपको बताया डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेरिवेटिव less than 0 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? इसको less than 0 इनपुट कर देंगे. 2x minus 1 whole raised to power 1/2 minus 2. Since it's a decreasing function, the derivative को हम less than 0 से input करें. And we see what that gives us. 2x minus 1 whole raised to power 1/2. This should be less than 0. ये हमें क्या देता है? This gives us 2x minus 1 whole raised to power 1/2 less than 2. And now what we want to do is we want to get rid of this power. हम दोनों sides पे square ले लेते हैं. Inequalities के अंदर आप स्क्वायर ले सकते हो दोनों साइड्स का जब दोनों साइड्स आपको पता है कि नेगेटिव नहीं है. अगर दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं तो आप दोनों का स्क्वायर ले सकते हो. ठीक है? तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वायर लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 2x minus 1, that's less than 4, and that gives us 2x less than 5 and x less than 5/2. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5/2. Now this function is going to be a decreasing function when the value of x is less than 5/2. That's when it's going to be a decreasing function. ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे पास वहां पे डोमेन दी हुई थी उधर फंक्शन के अंदर, that's x between 1/2 and a. मिनिमम वैल्यू तो उसने बताई है 1/2. वो 1/2 मिनिमम वैल्यू क्यों बताई है? So let me just actually clarify that more. यहाँ पे हमने स्क्वायर दोनों साइड्स को क्यों कर दिया? क्यों ये अलाउड था यहाँ पे स्क्वायर करना? नॉर्मली इनइक्वालिटीज में वी आर जनरली अ बिट केयरफुल. यहाँ पे हम क्यों कर सकते थे स्क्वायर दोनों साइड्स पे? क्योंकि x की वैल्यू देखें ग्रेटर देन 1/2 है. जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है ना पूरा, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है. ठीक है? नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी नो बोथ साइड्स आर पॉजिटिव. दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे दोनों साइड्स को इसलिए स्क्वायर कर दिया. सो दैट्स व्हाई we can do this here. And now using this fact that it's a decreasing function and the derivative is supposed to be less than 0, what we're getting is that the value of x should be less than 5/2. अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास डोमेन में? इसने कहा है x is between 1/2 and a. तो a क्या होना चाहिए? a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? If we compare the two, a की वैल्यू should be 5/2 because only then this can be a decreasing function. a की वैल्यू यहाँ पे हम 5/2 लग देंगे. All right? Any problems with this? Is that okay? अच्छा, that's question number 2. Let's move on. आपका final result क्या होगा? a is 5/2. Where is that coming from? उसने आपको बताया हुआ the domain is from 1/2 to a. हमें यहाँ से मिला x 5/2 से कम होना चाहिए for this to be a decreasing function. The 5/2 की वैल्यू, ये a की वैल्यू आपकी 5/2 होनी चाहिए. All right, let's move on to the next one. Question number 2 हमने देख लिया. Next we're going to move to question number 6. Question number 3 आसान है. It's a simple quadratic question. This is trigonometry.
It looks a bit complicated because यहाँ पे k आ गया, but it really isn't. आप try करें, बहुत जल्दी हो जाएगा. It's only 2 marks as well. Shouldn't take a lot of time. पर आपने equation solve करनी है. This is circular measure. Doesn't look very difficult. Let's look at this. Question number 6. You've got functions here. F and G are both defined for all real values of x. इसका मतलब होता है x can be any real value, and they're given by these two functions. F of x equals x squared minus 2x plus 5, and g of x equals x squared plus 4x plus 13. Now it says by first expressing each of f of x and g of x in completed square form, express g of x in the form f of x plus p plus q, where p and q are constant. अच्छा, उसने कहा है f of x और g of x को सबसे पहले क्या करना है आपने? उनका स्क्वायर कंप्लीट करना है. So you've got to follow the instruction. आपको पहले उनके स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं दोनों. ठीक है? Let's do that. You've got f of x. F of x is x square minus 2x plus 5. And we've got g of x. G of x is x square plus 4x plus 13. Squares complete कर लेते हैं दोनों के. क्या करेंगे? We'll leave some space after 2x. 2 को half करेंगे. 2 का half क्या होता है? 1. We're going to add square of 1 and also subtract square of 1. And then we've got plus 5 outside. ठीक है? अभी क्या होएगा? These 3 terms are going to give us a perfect square. First term से x आ जाएगा. Then we've got minus from the second term. And then this 1, x minus 1 whole squared. Outside I've got minus 1 plus 5. That becomes plus 4. What about g of x now? What does g of x give me? उसमें भी इसी तरह से square complete कर लेते हैं. We've got x square plus 4x. Then we add half, square of half of 4. 2 का square इसमें add कर लेते हैं. और 2 का square से minus कर लेते हैं. And then we've got plus 13 outside. Now again, the first 3 terms are going to give us a perfect square. And that's x plus 2 whole square. Outside we've got minus 4 plus 13. That's going to become plus 9. ये आपने दोनों functions को इस form के अंदर लिख लिया, completed square form के अंदर. And now what we've got to do is, उसने कहा है g of x को आपने लिखना है इस form के अंदर f of x plus p plus q. Basically, function f के ऊपर आप क्या transformation करेंगे? Function f के ऊपर क्या transformation करेंगे तो वो g of x बन जाएगा. That's what we're looking for. All right? अब function f को किस तरह से change करेंगे तो वो g of x के equal हो जाएगा. So basically we're starting from f of x. इसमें क्या changes करेंगे तो आपको g of x मिल जाएगा. That's what we want. g of x को आपने इस form में represent करना. Now let's think about this. एक तो आप उसने अंदर लिखा हुआ है plus p. x को किसी चीज से replace करना है. Now if you look at what's inside the function, you've got x minus 1 here. What have you got here in g? We've got x plus 2. x minus 1 से आपको x plus 2 पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 add करना पड़ेगा. आपको 3 उसके अंदर add करना पड़ेगा. x की जगह पे आप क्या करोगे? -1 से आपने +2 पे जाना है. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको +3 करना पड़ेगा अंदर. ठीक है? And then outside we've got 4 here, we've got 9 here. 4 से 9 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 add करना पड़ेगा. So outside the function we've got +5. This is how you can represent g of x. Function f में क्या करेंगे? Function के अंदर 3 add कर देंगे. ठीक है? और function के बाहर क्या करेंगे? 4 से 9 पे जाने के लिए 5 add कर देंगे. And that's going to give us 9 there. ये आपकी दो चीजें हो रही होंगी यहाँ पे. So g of x can be represented like this. Now we can say g of x is equal to f of x plus 3 plus 5. उसने कहा हुआ है p और q constant. So if you want to write down their values, you can do that. p is 3 and q is 5. ठीक है?
Now in the second part it says describe fully the transformation which transforms the graph of f of x to the graph of g of x. आपने वो लिख तो लिया इस फॉर्म के अंदर. अब ये कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? You got one transformation happening inside the function, तो ये +3 हो रहा है. एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के बाहर हो रही है. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं f of x +3 +5 दोनों में एडिशन हो रही है. दोनों में एडिशन हो रही है, तो दोनों ये ट्रांसलेशन है. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है. जो अंदर वाली ट्रांसलेशन है ये हॉरिजॉन्टल है, बाहर वाली वर्टिकल है. ठीक है, ये दो चीजें हो रही हैं. अब आपने ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, आप साइड पे पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लें कि क्या क्या हो रहा है. 3 ऐड हो रहा है यहाँ पे. रिमेंबर हॉरिजॉन्टल में थिंग्स वर्क द अदर वे अराउंड. अगर आप +3 करते हो, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इज आपका जो फंक्शन है वो 3 यूनिट्स लेफ्ट पे मूव कर रहा है. प्लस करने से फंक्शन लेफ्ट पे मूव करता है हॉरिजॉन्टल के अंदर, माइनस करने से राइट पे मूव करता है. वर्टिकल के अंदर प्लस करने से क्या होता है, your graph moves upwards, और माइनस करने से it moves downwards. So +5 का क्या मतलब होएगा, आपका ग्राफ 5 यूनिट्स ऊपर मूव कर रहा है. But this is not acceptable. या आप ये नहीं लिख के आ सकते. This is just for your own understanding. आपका आंसर क्या होएगा, आप क्या लिखोगे. उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताएं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. You've got to use the correct terminology. This is translation. आपने ट्रांसलेशन ही लिखना है, इसको कुछ और नहीं लिखना, कोई और वर्ड नहीं लिखना. मूव कर गया है, don't write that. Write translation. That's the appropriate terminology. And then don't write left, right, up, down. Don't do that. Write down the translation vector. ठीक है, recent marking schemes में उसने लिखा हुआ है कि अब ये वाली लैंग्वेज वो एक्सेप्ट नहीं करता. पहले कर लेता था, अब नहीं कर रहा एक्सेप्ट. आपको वेक्टर लिखना है ट्रांसलेशन का. वेक्टर क्या होगा, 3 यूनिट्स लेफ्ट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, इट्स गोइंग टू बी -3. वर्टिकल कंपोनेंट 5, this is going to be -3 and 5. That's the translation that we got here. ये आपने लिखना है वहां पे. This is the translation -3, 5. All right, let's move on to the next one. Next we have question number 7. This is binomial, ये आप कर सकते हैं. Question number 8. Again, we've got functions. Functions f and g are defined as follows. We've got two functions. सबसे पहले इसका equation solve करें. f g of x equals 3. That's relatively straightforward. Let's start with that. पहले f g of x function find कर लेते हैं. f g of x क्या मतलब है, f of g of x. f के अंदर आपने g input करना है. ठीक है, g क्या है, g is 1 over 2x plus 1. f के अंदर आप ये input कर दें. जहां पे भी x आ रहा है फंक्शन f के अंदर, you replace that with this thing. So what does that give us? That gives us 1 over 2x plus 1 whole squared minus 1. This is the function f g of x. अब उसने क्या कहा था, उसने आपको कहा ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. f g of x equals 3. अब ये इक्वेशन सॉल्व कर ले. f g of x equals 3, तो जो ऊपर आपने एक्सप्रेशन निकाला है उसको आप इक्वेट कर दें उसके साथ. 1 over 2x plus 1 whole square minus 1, that equals 3. Let's see what we get from this. 1 over 2x plus 1 whole squared equals 4. We can cross multiply, or we can just take this thing to the right there. अगर हम उसको वहां पे ले जाते हैं, we get 1 equals 4 into 2x plus 1 whole square. ठीक है, which का 4 को यहाँ पे लेफ्ट पे लिख लें. That's also fine. 4 को यहाँ पे नीचे ले आते हैं. Now you got this. Now you could either expand this 2x plus 1 whole square को आप expand कर लें और फिर इसको as a quadratic solve कर लें. That's something that you could do there, but it's going to be much quicker to just take square root on both sides rather than expanding and then using factorization or quadratic formula. आप simply क्या कर सकते हैं, दोनों का square root ले लें, right? दोनों का square root ले लें. Square root लेके तो क्या होगा, remember आपके पास plus minus आएगा हमेशा. So you get 2x plus 1 equals plus minus 1 over 2. Plus minus नहीं बोलना यहाँ पे. So you get two equations. 2x plus 1 equals 1 over 2, or you've got 2x plus 1 equals minus 1 over 2. मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ. So I'm taking square root on this side and this side.
But remember, whenever we take square root, we have to put plus minus. यहाँ से आपके पास कुछ values आ जाएंगे. You get 2x equals minus 1 over 2 and x equals minus 1 over 4. That's one value of x that I'm getting. And from the other one, I get 2x equals minus 3 over 2. And that gives me x equals minus 3 over 4. And these are the two solutions that I was supposed to get. X equals minus 1 over 4 and x equals minus 3 over 4. But now we've got to be careful. ये functions का question है. Function के अंदर आपको देखना पड़ता है कि आपकी domain क्या दी हुई है. कोई extra answers तो नहीं आ रहे आपके पास. Let's look at the domain. आपने कौन सा फंक्शन फाइंड किया है? एफ जी ऑफ एक्स. कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? एफ जी ऑफ एक्स. ये फंक्शन यूज कर रहे हैं. इसकी डोमेन क्या होगी एफ जी ऑफ एक्स की? डोमेन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन इज द डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन. जो जी की डोमेन है वही आपके इस कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन है. जी की डोमेन क्या चीज है? जी की डोमेन हमारे पास है एक्स लेस देन माइनस 1 over 2. दैट्स द डोमेन दैट वी गॉट फॉर द फंक्शन जी. कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन क्या होती है? It's the domain of the inner function. G function यहाँ पे inner function है, उसकी domain आपकी composite function की domain होगी. क्या मतलब? X की values minus 1 over 2 से कम होनी चाहिए. Now let's look at the results that we've got here. This is greater than minus 1 over 2. ये वाली value है, this is greater than minus 1 over 2. This is not possible. तो आपको क्या करना पड़ेगा? You'll have to ignore this result. You'll say this is not possible. Why? Because x is supposed to be minus 1 over 2. ये वाला answer आपको reject करना पड़ेगा. And you have only one solution here. That is x equals minus 3 over 4. That's your only answer. इस पर अगर आप दोनों answers लिख देंगे, you will lose marks. आपको एक mark कट जाएगा वहाँ पे. ठीक है? So that's what you get here in this part. Now it says find an expression for fg whole inverse of x. Now you just have to find the inverse function, but it's not of a simple function. उसने composite function का inverse निकलवाया आपसे. Now notation looks a bit confusing, लेकिन इसका process exactly वही है जो आपके पास पहले होता है. आपने fg function का inverse निकाल लें. fg function है आपके पास already, आपने find किया हुआ है पहले. fg of x function क्या था? fg of x function was 1 over 2x plus 1 whole square minus 1. ये मेरे पास fg of x function है. I've already evaluated this. इसके ऊपर बस inverse वाला process apply कर दें. क्या करेंगे? जो function notation है इसके जगह पे y लिख दें. Let's say y equals fg of x, and that becomes y equals 1 over 2x plus 1 whole square minus 1. अब क्या करना है? x को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, x को सब्जेक्ट बना लेते हैं. 1 को दूसरी साइड पे ले जाए. It becomes 1 over 2x plus 1 whole square equals y plus 1. और actually इसको उसी साइड पे रख लेता हूँ. तो मैं x को न्यूमरेटर में लेकर जाना है, इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ. 1 over 2x plus 1 whole square, और वहां पे मेरे पास आ गया y plus 1. And now what I can do is I can take y plus 1 to the denominator there और x को वहां पे ले जाए, because मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं x को ऊपर लेकर आ रहा हूँ न्यूमरेटर के अंदर, and that's going to give me 2x plus 1 whole square equals 1 over y plus 1. Now I can take square root on both sides, but again remember, whenever we take square root we have to put plus minus. तो हमारे पास क्या आएगा? 2x plus 1 equals plus minus square root of 1 over y plus 1. ठीक है? And now what we do is we take 1 to the other side. जो 1 है इसको दूसरी साइड पे ले जाए, and that gives us 2x equals minus 1 plus minus 1 का square root तो 1 ही होता है. We can say 1 over square root of y plus 1. And now we divide by 2 there. 2 से divide किया तो क्या आ गया? Minus 1 over 2 plus minus 1 over 2 square root of y plus 1. ये हमारे पास आ गया end पे x को जब हमने subject बना लिया. And now what we need to do is we need to figure out whether we're going to use plus here or minus here. हमेशा आपको एक choose करना होता है. साइन यहाँ पे दोनों साइंस नहीं हो सकते, because दोनों साइंस के साथ आपका फंक्शन ही नहीं होता.
एक साइन हो सकता है, या तो प्लस या माइनस। अब ये कैसे चूज करेंगे, वापस जाके देखते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन के डोमेन हमारे पास क्या है दोबारा से, x लेस देन -1/2। सो बेसिकली जो x की वैल्यू है वो -1/2 से कम होनी चाहिए। नाउ थिंक अबाउट दिस, यू गॉट -1/2 हियर, इफ यू ऐड समथिंग टू -1/2 वो तो -1/2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। If you subtract something from -1/2, that's going to be a smaller value than -1/2. What do you need? You need smaller values than -1/2. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। हम कहेंगे x is actually -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1। अब इसको इनवर्स वाली फॉर्म के अंदर लिख दें, राइट साइड पे x पे कन्वर्ट कर दें उसको, और लेफ्ट साइड पे आप इनवर्स वाली नोटेशन लिख दें। लेकिन इनवर्स किसका है, अब इनवर्स है फंक्शन एफ जी का। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस लाइक दिस, एफ जी का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नोटेशन आपने एंड पे जाके एक्स को उससे रिप्लेस कर दिया, और राइट साइड पे आपने y की जगह पे x कर दिया। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन, दिस इज द इनवर्स फंक्शन। ऑलराइट, प्लस माइनस को आपने पहले लिखना है और बाद में चूज करना है कि उसमें से कौन सा आपको इनपुट करना चाहिए वहां पे। ऑलराइट, अच्छा, question number 4, let me have a look at that. Question number 4 doesn't look that hard, it should be pretty straightforward. आप ट्राई करें, हो जाएगा। tan को बस sin over cos लिख दें, and then it's just going to simplify everything, it's going to simplify automatically। कैंसिलेशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वो आ जाएगी फॉर्म, कॉमन लेंगे कैंसिलेशन हो जाएगी। लेट मी डू इट वेरी क्विकली द फर्स्ट पार्ट, उसके बाद हम वापस आते हैं आगे। tan को आप लिखते हैं sin x ओवर cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय, अगेन डिनोमिनेटर में भी क्या करें, तो आप लिखते हैं sin x ओवर cos x माइनस sin x। ठीक है, अब एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, क्या हो जाएगा, sin x प्लस sin x cos x divided by cos x whole divided by sin x minus sin x cos x whole divided by cos x। cos x cancel हो गए, what are we left with, न्यूमरेटर में क्या आ गया, अगर sin x कॉमन ले लें आपके पास बचा 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर में क्या बचा, अगेन वहां से भी sin x कॉमन ले लें, 1 माइनस cos x, sin x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वो आ जाएगा 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। राइट, राइट साइड पे तो k चलता है, राइट लाइक दैट, ये राइट पे तो k लिखा हुआ है, उसको वैसे ही रहने दें। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू प्रूव, ये आपके पास आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट उसके बाद आसान है, वो हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी आसान है, वो आप कर लेंगे। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी डूइंग। A geometric progression is such that the second term is equal to 24% of the sum to infinity. Okay, so first of all, it's a GP that we're talking about. Geometric progression. GP का sum to infinity formula क्या होता है? Formula sheet में लिखा होता है, sum to infinity is A over 1 minus R. The second term, the term formula क्या होता है? Tn equals A R raised to power n minus 1. Again, it's given in the formula sheet. Second term जो है वो 24% है sum to infinity का। Find the possible values of the common ratio. आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपके पास सिर्फ ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। What's the second term? Let's find that. Second term find कर लें। Second term क्या होगी? T2, that's A into R raised to power n minus 1, 2 minus 1, so that's just AR. Okay, that's the second term. ये आ गई। Sum to infinity हमें पता है A over 1 minus R. Equation क्या बन जाएगी? Second term is equal to 24% of the sum to infinity. Okay.
सेकेंड टर्म लेफ्ट पे लिख लें, write it like this, पहले उस नोटेशन में लिख लेते हैं. Second term is 24%, that means 24 over 100, or you can say 0.24 of the sum to infinity. ये उसने रिलेशनशिप बताया हुआ है. Just input values now. AR equals 24 over 100 into A over 1 minus R. A कैंसिल हो गए दोनों साइड्स के ऊपर. R की वैल्यू फिगर आउट कर लें. It becomes 100R equals 1 minus R को भी वहीं पे ले जाते हैं. So we can say this is 100R into 1 minus R, that equals 24. Now simplify this. 100R minus 100R square, that equals 24, and that gives us 100R square minus 100R plus 24 equals 0. We can simplify this. 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, या 4 से कर सकते हैं. So we have 25R square minus 25R plus 6 equals 0. Now you can see whether factorization is possible. 25 into 6, 150. 150 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? 150, 15 and 10. Yeah, so 15 and 10 works. So we can factorize this. 25R square. Remember ये paper 1 है, इसमें working show करनी जरूरी होती है. इसको इस तरह लिख सकते हैं 25R square minus 10R minus 15R plus 6 equals 0. Otherwise आप quadratic formula में values input कर दें, उससे आपके पास आ जाएगा. उसके बाद calculator से value डाल दें. That's also okay. 5R common लिया, we get 5R minus 2. यहाँ से हमने 3 common लिया, and we got 5R minus 2. We got two factors, 5R minus 3 and 5R minus 2 equals 0. R equals 3 over 5 or R equals 2 over 5. ये दो values आपके पास आ गई. The possible values of R. उसने कहा था find the possible values of the common ratio. That means you are going to get multiple results. ये हमारे पास ये दो results आ गए हैं. ठीक है? Okay. Let's move on. Part B of this. Now it says an arithmetic progression. P has first term A and a common difference D. Let's write that down. It's an arithmetic progression now. It has a first term. It has the first term A and common difference D. And arithmetic progression Q has the first term 2A plus 1 and common difference D plus 1. Achha. Find the value of A and of D given this information. Fifth term of P and 12th term of Q, उनका ये relationship है, sum का ये relationship है. Okay. Now let's try to figure this out. हम formulas लिख लेते हैं. साइड पे AP के formulas क्या होते हैं? यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ. दोनों AP हैं, right? So we're talking about only AP here. AP के formulas जो आपको पता होने चाहिए, जो आप यहाँ पे use करने हैं. एक तो term formula, again formula sheet में दिया होगा A plus n minus 1 times D. Sum formula, sum के दो formulas होते हैं. यहाँ पे आपको last term का तो नहीं पता. A और D के terms में है, तो वो आपका formula जो होता है n over 2 into 2A plus n minus 1 times D. ये दो formulas हमने use करने हैं यहाँ पे. ठीक है, term formula और sum to infinity वाला formula. अच्छा, सबसे पहले उसने आपको ये relationship दिया है between the terms. Okay. इसको fraction के बजाय अगर हम उस तरह से लिख लें, cross multiply करके, तो space भी थोड़ी सी बच जाएगी. It's going to be slightly easier to deal with as well. We have 3 times fifth term of P. I'm writing down this equation first. 3 को मैं multiply कर रहा हूँ left side पे, इसको इस side पे. We basically have 3 into P5 of P, term 5 of P, that equals T12 of Q. Q की 12th term. ठीक है? अच्छा, term 5 of P, ये कैसे find करें? आप बेशक अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिख दें. Actually write that down separately ताकि confusion नहीं हो. यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले. आपको क्या क्या चाहिए? P के लिए कुछ information चाहिए और आपको Q के लिए कुछ information चाहिए. क्या क्या चाहिए? हमें इनके terms चाहिए. कौन कौन सी term चाहिए? P की कौन सी term चाहिए? P की हमें चाहिए 5th term.
P का हमें क्या पता है? फर्स्ट टर्म इज A एंड द डिफरेंस इज D. ठीक है, ये तो हमें ये दो पैरामीटर्स दिए हमें. फिफ्थ टर्म इसकी कैसे आएगी? T5, that's going to be A plus 5 minus 1, that's 4 times D. ये आ गया. Sum of the first 5 terms है S5 निकाल लें. That is going to be 5 over 2 into 2 times A plus N minus 1, 5 minus 1, that's 4 into D. ये आपके पास ये दो चीजें आ गई P की. Q के लिए क्या चाहिए आपको? You need the 12th term. 12th term कैसे आएगी? A plus N minus 1 into D, but remember first term यहाँ पे क्या है इसकी? 2 into A plus 1. So इसके parameters यहाँ पे क्या लिखा है? 2 into A plus 1, that's the first term. And the difference is D plus 1. तो ये values input करनी है term formula के अंदर. A की जगह पे क्या डाल देंगे? 2 into A plus 1. ये आपके पास term formula में ये आ गया. Plus N minus 1, यानी 12 minus 1, that's 11 times the difference. Difference क्या है यहाँ पे? Difference is D plus 1. ये हमारे पास term formula आ गया. You can simplify this. This gives you 2A plus 2 plus 11D plus 11, and that is 2A plus 11D plus 13. ये T12 आ गया Q का. Sum of the first 5 terms for Q, वो क्या होगा? N over 2, N is 5 here, 5 over 2, multiplied by 2 times the first term. First term is क्या है? First term is 2 into A plus 1, so that's going to be 2 into 2 into A plus 1 plus N minus 1. N is 5 here, so N minus 1 4 हो गया, 5 minus 1 into the difference. Difference is D plus 1. ये आपके पास sum of the first 5 terms इसका भी आ गया. We can simplify this if we want. 5 over 2 multiplied by 4A plus 4 plus 4D plus 4. This is what we end up with. इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ. 4 और 4 ऐड होके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 8. So I end up with 4A plus 4D plus 8. This is sum of the first 5 terms here. ठीक है, अब क्या होएगा? हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, एक टर्म वाले रिलेशनशिप को यूज करके और एक सम वाले रिलेशनशिप को यूज करके. ठीक है, लेट्स डू दैट. टर्म वाले रिलेशनशिप को यूज कर लेते हैं. 3 into term 5 of P, that equals term 12 of Q. ये रिलेशनशिप है. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया. This is the relationship. Just input the values now. Term 5 क्या है? Term 5 is A plus 4D. Term 12 क्या है Q की? That is 2A plus 11D plus 13. So we got one equation here. Let's simplify this. We get 3A plus 12D equals 2A plus 11D plus 13. And that gives me A plus D equals 13. ये एक simple equation आ गया आपके पास. This is equation 1. Let's make another equation from the other relationship that we are given. Sum of the first 5 terms, इसको भी हम cross multiply करके इस तरह लिख लेते हैं. 3 times sum of the 5 terms of P, that equals 2 times sum of the 5 terms of Q. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब इसमें वैल्यूज इनपुट कर दें. हमने इवैल्यूएट तो कर लिया ऊपर सब कुछ. 3 into sum of 5 of P, that's going to be 5 over 2 into 2A plus 4 times D. Achha. What do we have on the right side now? On the right side, we have 2 into sum of 5. So sum of the 5 terms of Q, that's going to be 5 over 2 into 4A
plus 4d plus 8. ठीक है, अब दोनों साइड पे देखें 5/2 कॉमन है, इसको आप कैंसिल कर दें पूरे को. What are we left with? We're left with 6a plus 12d equals 8a plus 8d plus 16. ठीक है, and this is going to give me minus 2a plus 4d equals 16. This is the second equation. ये दो equations आ गई हैं, अब इनको simultaneously solve कर लेंगे और हम values find कर लेंगे. First equation से हम किसी को अगर subject बना दें, let's say d equals 13 minus a, इसको जाके वहां पे input कर दें. Minus 2a plus 4 into 13 minus a, that equals 16. आपको working दिखानी पड़ती है because this is paper 1. They expect you to solve simultaneous equations properly. Plus 52 minus 4a equals 16. यहाँ से आप देखें फर्स्ट क्या आ जाता है. 16 minus 52, that goes to the other side. The 6 है divided by 6. That gives me value of a, which is 6. A is turning out to be 6 for me from here. ठीक है, a की वैल्यू आ गई. जब a की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. फिर d क्या हो जाएगा, d हमारे पास 7 हो जाएगा. We input this back there. D is going to be 13 minus 6 and D equals 7. These are the two values that we were looking for. ये हमारे पास आ गया. This is question number 9, part B. It was quite tricky, especially इसकी working. इसमें बहुत ज़्यादा errors के chances होते हैं. I hope that makes sense. ठीक है? Let's move on to the next one. So we're going to try and be quick. It's late now. Question number 10. We've got these points A, B, and C. These 3 points. Can you guys still hear me? Because I think my AirPod stopped working. Is the speaker, is the microphone here working? Just put this in. And check here. Can you still hear me? Can you guys still hear me? Okay, good. Thank you. Okay. Yeah, so points A, B, and C lie on the circumference of a circle with center D. You got these 3 points. They lie on the circumference of a circle. Show that the angle ABC is 90 degrees. Angle ABC 90 show करना है, कैसे करेंगे? We can find the gradient of AB. AB का gradient निकाल लें और BC का gradient निकाल लें. And they should be negative reciprocals of each other. उनका जो product है वो -1 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ABC एंगल ये बन रहा है ना, so it's going to be like this. अगर A यहाँ पर है, B इधर है, C इधर है, ये 90 बन रहा है, तो AB और BC perpendicular होने चाहिए एक दूसरे के. Let's find their gradients. Gradient of AB, what does that turn out to be? 0 minus 3 divided by 3 plus 2, that is -3/5. What about the gradient of BC? That's 5 minus 0 divided by 6 minus 3, and that is 5/3. And now we can say their products are equal to 1. -1. So हम ये show कर देते हैं, -3/5 into 5/3. That gives us -1. So we can say AB is perpendicular to BC. That means the angle ABC is going to be 90 degrees. ठीक है, B के ऊपर angle आपका 90 बन रहा है. That's our result. Now it says, hence state the coordinates of the point D. D के coordinates अब आपको बताने हैं given this information. Now, how do you find that? Think about this. It's a circle. A, B, and C lie on a circle. Let me just draw that figure. ये आपका एक circle है. Center को उसने कहा
D. So the center is maybe here. This is the center of the circle. A, B, and C all lie on the circumference of the circle. तीनों circumference पे lie करते हैं. Now remember the property of circles. Remember the property of circles. कोई भी chord आपके पास हो, in this case the chord is AC. अगर ये एक थर्ड पॉइंट के साथ 90 degrees angle बना रही है, there's only one possibility, and that possibility is that chord has to be the diameter. सिर्फ diameter 90 degrees angle बनाता है सर्कल के अंदर सिर्फ diameter 90 degrees angle बना सकते हैं. बाकी कोई भी chord या तो 90 से बड़ा एंगल बनाएगी, 90 से छोटा एंगल बनाएगी. 90 डिग्री जब भी एग्जैक्ट होएगा, it has to be the diameter. So basically what we have proved in the first part, that basically tells us AC जो है आपका वो diameter. AC should be the diameter because only diameter can make a 90 degrees on the circumference. That's a property of circle that we've done in O levels and A levels में revise किया हुआ है इसको. That's the diameter. Okay. अगर AC diameter है तो center कैसे आएगा? इसका midpoint निकाल लेंगे. D coordinates क्या हो जाएंगे? It's actually going to be midpoint of AC, which is going to be -2 + 6 over 2 and 3 + 5 over 2, and that gives me 2 and 4. These are the coordinates of the point D, which is the center of the circle. ठीक है. अब वो कहते हैं find an equation of the circle. That's pretty straightforward. Equation of circle की क्या form होती है? You've got x minus a whole square plus y minus b whole square equals r square. That's how you find the equation of a circle. ठीक है. A और B center होते हैं, R radius होता है. Center के coordinates हमारे पास आगे. So we have x minus 2 whole square, that's the x coordinate. The y coordinate of the center is 4, so that's y minus 4 whole square. And now this should equal r square. Do we know the radius? We don't know the radius. हम क्या करेंगे? Radius find कर लेंगे. AD length निकाल लें या AC निकाल लें, उसको half कर लें, एक ही बात है. Let's find the radius. AD let's say हम find कर लेते हैं. x2 minus x1 whole square. So that's going to be 2 plus 2 whole square. This is 2, this is minus 2, or 2 plus 2 ho gaya. Plus 4 minus 3 whole square. Now that gives me 8, no, sorry, 2 and 2, that's 4. 4 ka square is 16. 16 plus 1, that's square root of 17. This is the radius. ये आपका radius आ गया. यहाँ पे radius का square चाहिए, तो क्या लिखेंगे? Square root of 17 का square, which is 17. This is the equation of the circle. Just leave it like this, and that's going to be your final answer here. ठीक है? Okay, let's move on. The next part. The point E lies on the circumference of the circle such that BE is the diameter. Okay, अब इस तरह के cases के अंदर ना, it really helps to have a rough sketch. उससे आपको समझ बेहतर आती है कि आपको क्या करना है. So I had a sketch here. I'm just going to use that here. थोड़े से points properly mark कर लेते हैं, उससे सोचना बहुत आसान हो जाता है. Figure draw किए बगैर समझ नहीं आती इतनी अच्छी. अच्छा, ये points मैंने वैसे randomly mark किए थे पहले. I'm going to try to be a bit more accurate now, a bit more reasonable. Center 2 4 था. अगर center 2 4 था, तो A के side पर होएगा -2 3. -2 लेफ्ट पर होएगा, 3 थोड़ा सा नीचे होगा, तो A जो है वो कहीं इधर होना चाहिए, तो लेफ्ट पे, और 4 से थोड़ा सा नीचे. ये आपका पॉइंट A आ गया. अच्छा, B किधर होना चाहिए? B शुड बी 3 0. ओके, 3 यानी 2 के राइट साइड पे थोड़ा सा, x y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 3 0 यहाँ पे नीचे आएगा कहीं पे. 3 और 0, so maybe it's somewhere here. This is point C. जो B है, sorry, this is point B or C. This is point B, not C. ये point B है. AC the diameter था, तो C कहाँ पर होगा? C
ए के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर ये आपका पॉइंट सी आ गया। ठीक है, हमने मार्क कर लिया पॉइंट्स, इस तरह के पॉइंट्स तकरीबन होने चाहिए हमारे पास। ओके, अच्छा अब क्या करें? अब इसने कहा है the point E lies on the circumference of the circle such that BE is the diameter. Okay, अब देखें, अब आपको समझ आ रही है। BE diameter है, यानी कि B अगर यहाँ पे नीचे है तो E किधर होएगा? Oh, sorry about that. Go back there. Yeah. So if B is down here, where is E going to be? E is going to be on the other side of the center, and that's going to be somewhere here. क्या मसला है? Yeah, E is going to be somewhere here. ये आपका point E आ रहा होगा यहाँ पे. All right. Now we need to find an equation of the tangent to the circle at the point E. अब पहला मसला क्या है? E के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हमें, ठीक है, और दूसरा क्या है, हमें टेंजेंट के लिए ग्रेडियंट भी चाहिए होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? We know B is 30. Let's write that down here. Since BE is supposed to be the diameter, that means जो D आपका midpoint है BE का, right? D is the midpoint. Midpoint formula यूज करके ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप वेक्टर मेथड यूज कर ले, that's pretty quick. वो क्या होएगा? You know one point, that's B. B is 30. You know the center, the midpoint, that is 2, 4. How much do you have to move to go from 3 to 2? 3 से 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? -1 करना पड़ता है। 0 से 4 पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? +4 करना पड़ता है। Now since D is the midpoint and E is on the other side, तो E पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना उतना और आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, so -1 और चले जाएं, तो D E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 - 1, that's 1. X कोऑर्डिनेट 1 हो गया। 4 में 4 और ऐड कर दें, and that gives you 4 + 4, that is 8. These are the coordinates of the point E. E के coordinates आ गए। अब क्या चाहिए इक्वेशन के लिए? ग्रेडियंट के पॉइंट के साथ साथ आपको और क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट चाहिए होता है। अब ग्रेडियंट आपको फाइंड करना है टेंजेंट का। टेंजेंट ग्रेडियंट कैसे आएगा? We know tangent is perpendicular to the radius. DE का रेडियस निकाल, DE का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। Let's find that. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो टेंजेंट का आ जाएगा। Let's figure that out. Gradient of DE. Let's find that now. D coordinates क्या थे? 2, 4. Yeah, so let's do that. 8 - 4 divided by 1 - 2. And that gives us -4. That's the gradient of DE. What about the gradient of the tangent? That's going to be negative reciprocal of this. -4 का negative reciprocal, sign change और reciprocal, that's 1/4. Gradient आ गया और point आ गया। ये दो चीजें चाहिए थी हमें। ये point है, ये gradient है। We can write down the equation of the tangent now. That's going to be y minus y1 equals m into x minus x1. Y minus 8 equals 1/4 into x minus 1. That's the equation of the tangent. उसने आपको simplify करने के लिए नहीं कहा, कोई specific form भी नहीं मांगी आपसे। आप इस तरह से अपना आंसर छोड़ सकते हो। This is the equation of the tangent, and that's your final result. All right. So it was 5 marks, but not very difficult. Why? Because once we make the figure, it becomes much easier to understand. All right. Let's move on to the last one now. Question number 11. That's the last one that we're doing now. It doesn't look very difficult. सिर्फ k की वजह से थोड़ा सा शायद लग रहा है। Let's try this. Let's do this very quickly now. The diagram shows part of the curve with equation this, where k is a positive constant. Find the coordinates of the minimum point of the curve, giving an answer in terms of k. अच्छा ठीक है, minimum point find करना है, so that may be somewhere here. Turning point कैसे find करते हैं? Find the derivative, put that equal to 0. वो करते हैं यहाँ पे y equals x raised to power 1/2 plus k square. K is a constant, remember. X raised to power -1/2. इसको डिफरेंशिएट कर लें, dy over dx. What do we get? 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर में से 1 माइनस कर दिया,
प्लस k स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो वो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय द पावर 1/2 -1/2 से मल्टीप्लाई किया, डिक्रीज द पावर बाय 1, so -1/2 -1 दैट बिकम्स -3/2। अब क्या करना है, क्योंकि आपको मिनिमम पॉइंट चाहिए था, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, and that gives you 1/2 x raised to power 1/2 plus or minus k square over 2, उसको भी नीचे अगर ले जाए comes x raised to power 3/2। ठीक है, अब क्या करें, अब हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम जो है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, so that be easier, let's take k square over 2x whole raised to power 3/2 on the left side, on the right side I've got 1/2x raised to power 1/2, and now I can cross multiply, right? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया k square x raised to power 1/2 that equals x raised to power 3/2। Okay, and now when this power 1/2 goes to the other side, ये जाके मतलब डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x raised to power 3/2 minus 1/2, that's k square, x equals k square, x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, k square आ गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया, अब और क्या चाहिए हमें, उसने कहा था कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए आपको, क्या करेंगे, इसको वापस कर्व की इक्वेशन में इनपुट कर दें, उससे आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लेट्स डू दैट, y इक्वल्स x raised to power 1/2 plus k square into x raised to power minus 1/2, that was the equation, उसमें x की जगह पे हम क्या करेंगे, k square डाल दें। Let's do that, that gives us k square whole raised to power 1/2 plus k square into k square whole raised to power minus 1/2। ठीक है, ये क्या मिला, k plus k square into k raised to power -1, ये क्या हो गया, k plus k, and that gives us 2 times k, y equals 2 times k। What are the coordinates now, the coordinates are therefore k square and 2k, these are the coordinates of the point that we were looking for, your turning point के coordinates आ गए हमारे पास। ठीक है, these are the coordinates that we were looking for। Now let's move on to the next one. Next part, it says the tangent at the point on the curve where x equals 4k square intersects the y-axis at P. Find the y coordinate of P in terms of k. Okay, now that's a bit complicated. सबसे पहले इसने क्या कहा है, tangent at the point where x equals 4k square that intersects the y-axis। तो पहले तो आपको उस tangent की इक्वेशन निकालनी है, और फिर उसमें क्या करेंगे, वो y-axis को इंटरसेक्ट करता है, उसका y-इंटरसेप्ट निकाल लें। How do you find the equation of a tangent? When we are given the equation of the curve, डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें ये x की वैल्यू इनपुट करेंगे, ग्रेडियंट आ जाएगा, और पॉइंट तो आपको पता है ऑलरेडी, उसने बताया हुआ x की वैल्यू 4k स्क्वायर है, तो उससे कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। वी ऑलरेडी हैव द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, dy over dx हमने फाइंड किया था वहां पे कहीं, I think, yeah, so we did। dy by dx was 1 over, यहाँ पे इनपुट क्या करना है, 4k स्क्वायर इनपुट करना है, ओके, 1 over 2x raised to power 1/2 minus k square over 2x raised to power 3/2। ये हमारे पास डेरिवेटिव था जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम x की वैल्यू इनपुट कर देते हैं 4k स्क्वायर। ठीक है, x वैल्यू 4k स्क्वायर इनपुट कर दें, let's see what that gives you। That will give you the gradient in terms of k, of course, so that's going to be 1/2 into 4k square whole raised to power 1/2 minus k square over 2 into
4k² अब इंडिसेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 4 raised to power 1/2, दैट्स गोइंग टू बी 2 k² इन raised to power 1/2, वो k रह जाएगा, -k² डिवाइडेड बाय 2 बाय है 4 raised to power 3/2। ये कैलकुलेटर पे इवैल्यूएट कर लें बेशक, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब, दैट्स गोइंग टू बी 8, यू गोइंग टू हैव 8 इनसाइड, k² एंड देन 3 raised to power 2, ये मल्टीप्लाई होंगी पावर्स, तो ये क्या बन जाएगा, k⁻³ बन जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज 1/4k माइनस 1/16k। इसको आप कैलकुलेटर पे देख लें, 1/4 माइनस 1/16 क्या आता है, द ग्रेडियंट टर्न्स आउट टू बी 3k/16। ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया इसका, सॉरी नॉट 3k/16, 3/16k, इट्स k आपके डिनोमिनेटर में, so it's going to be 3/16 times k. This is the gradient. This is the gradient at that point जिसका हमें फाइंड करना था। ठीक है, ग्रेडियंट आ गया। अब क्या करें, पॉइंट है क्या हमारे पास, पॉइंट भी नहीं है। पॉइंट के लिए आपको x = 4k², कर्व की इक्वेशन के अंदर इनपुट करना पड़ेगा। कर्व की इक्वेशन क्या थी, y = x⁻⁴ plus k² x⁻⁻⁴ -1/2। Let's input x = 4k² here, ये input कर देते हैं इसके अंदर। What does that give us? That gives us 4k² ⁻⁴ plus k² into 4k² ⁻⁻⁻⁻²। या उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं बेशक, या कुछ डिनोमिनेटर में आ गया 4k² ⁻⁴ ठीक है, x को डिनोमिनेटर में ले गया। And now let's evaluate this. ये क्या आ गया, 4 ⁻⁴ is 2 into k plus k² over 2k, and that's 2k plus k/2, which is 5k/2। ये आपके पास आ गया उसका y coordinate. So the point that we have now is 4k² and 5k/2। इस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट फाइंड करना, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गया। So now we've got the point and we've got the gradient। इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ग्रेडियंट भी है और पॉइंट भी है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 equals m into x minus x1। You're just going to use that formula that we've got for the equation of a straight line. Let's do that here on the sides. Y - y1 equals m into x minus x1. You can do this on the additional page at the end if you have to. So it becomes y minus 5k/2 equals gradient, that's 3/16 times k into x minus 4k²। ये आपके पास इक्वेशन आ गई उस टेंजेंट की। अब उसने क्या कहा है, it intersects the y axis at p, find the y coordinate of p। तो बेसिकली इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है आपने। y इंटरसेप्ट फाइंड कैसे करते हैं, इसके अंदर आप इनपुट कर देंगे x की वैल्यू 0, पुट x = 0, ठीक है। x 0 इनपुट किया तो क्या हो गया, y minus, so x 0 इनपुट करेंगे तो क्या आएगा, we will have y minus 5k/2 equals 3/16k into -4k²। Evaluate this and see what you get. It's going to be -12/16 times k on the right side, right? And then we have plus 5k/2। ये आप कैलकुलेटर पर डाल दें, -12/16, that's actually -3/4 plus 5 divided by 2, that's giving me 7/4। उसके साथ k लगा देंगे, 7/4/k। ये आपके पास आ रहा है उसका y इंटरसेप्ट।
Now it's a lot of working for 4 marks, but it's the last question. The last question में अक्सर difficulty level थोड़ा सा ज़्यादा होता है. This is what we get at the end. All right, that's part B. And now let's look at the last part now. The shaded region is bounded by the curve, the x-axis, and the lines. These find the area of the shaded region in terms of K. You can see the shaded region there. उसने आपको बताया हुआ है. Limits क्या है? ये limits है. ये area find करना है. Area कैसे find करते हैं? क्या formula होता है? AX equals integral of y with respect to x. ये area between the curve and the x-axis है. इसका ये formula होता है हमारे पास. इंटीग्रेट करें और लिमिट्स इनपुट कर दें. किसको इंटीग्रेट करें? फंक्शन y को. y क्या है? x raised to power 1/2 plus k square x raised to power minus 1/2. This is the function. We have to integrate it with respect to x. Let's do that. Limits क्या है? Limits are from 9k square over 4 to 4k square. ये दो लिमिट्स हैं. ये लिमिट्स इनपुट कर दें और इसको इंटीग्रेट करके वो लिमिट्स इनपुट कर दें. इंटीग्रेट करने के तो क्या आएगा? x raised to power 3/2 divided by 3/2. पावर इंक्रीज कर दी, पावर में 1 ऐड किया और उस इंक्रीज पावर से डिवाइड कर दिया. k square remains as it is. Power increase किया again 1/2 divide by that increased power. This is the integral. Let's simplify this. We get 2x raised to power 3/2. नीचे वाला 2 ऊपर चला गया. Divided by 3 plus 2k square x raised to power 1/2. And now what you got to do is you got to input those limits. 9k square over 4 से लेकर 4k square वो limits input कर दें. यहाँ पे input कर देते हैं हम 9k square over 4 to 4k square. अब सिर्फ algebra है. इसके बाद 4k square input करेंगे. उससे देखें क्या होता है. 2 into 4k square whole raised to power 3/2 divided by 3 plus 2k square into 4k square whole raised to power 1/2. That's the first thing. Upper limit. Lower limit input कर दें. Lower limit is 9k square over 4. That's going to be 9k square over 4 whole raised to power 3/2 plus 2k square into 9k square over 4 whole raised to power 1/2. Let's simplify this and see what we get. 2/3 into 4 raised to power 3/2 हो जाएगा 8 and then k cube plus 2k square into 2k minus 2/3 9 raised to power 3/2. ये again calculator पे डाल दें बेशक सीधा. 9/4 whole raised to power 3/2 calculator में डालें. क्या आता है? ये हो जाएगा 3 and then cube 27/8 हो जाएगा. k cube and then minus 2k square into 3k divided by 2. Again, it's a lot of working for 3 marks, but that's what it is. अब इनको ऐड कर लें. सब टर्म्स में क्यूब आ रहा है. सब टर्म्स के अंदर क्यूब आ रहा है. आप सारे नंबर्स को बस कैलकुलेटर में डाल दें. 2 into 8 divided by 3 plus 4 minus 2 into 27 divided by 3 and divided by 8 minus 3. This is giving me 49/12. 49/12. उसके साथ k लगा दें. K cube. That's your final result. 49k cube over 12. That's what we get from this. That's our final result. That's supposed to be the area of the shaded region. Okay. So yeah, that was a long session. We're going to end this here. I hope that was helpful.
this was the last question of this paper. And that's it for today. I'll see you again tomorrow, inshallah. And tomorrow we are doing mechanics. Papers 4, 1 and 4, 3. ये दो papers हम कल कर रहे होंगे इंशाल्लाह. इसमें से selected questions कर रहे होंगे. ठीक है? Alright, so that's it for today. Allah Hafiz everyone. Let's see you again tomorrow.